Hi friends, my name is Mohit Gaur and this is my first video on YouTube. So in this video, I am going to talk about the new syllabus of Tourism Administration and Management in NTA NET. This syllabus was changed recently. Earlier there was a different syllabus. Now they have came up with new syllabus. So we are going to talk about that only. So we will start with the video. So there are simply 10 units and हर एक यूनिट में मेजर 3 इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं and those will certainly help you to qualify in NET or JRF exam. So this is paper 2 basically. Paper 1 is standard for everyone and paper 2 is as per the subject you have taken. So tourism administration is the subject I am going to talk about. So moving on to the unit 1. Unit 1, the first important point of unit 1 is tourist, visitor, traveler and excursionist. आपको इन चीज़ों की definition आपको याद होनी चाहिए. You should know the definition and the difference of all these. So in ancient time, there were people who have given their different modules on travel and tourism definition and their differences. So आपको वही पढ़ना है कि क्या differences हैं इनके, tourist की definition क्या है, visitor की definition क्या है, who is a traveler, who is excursionist, इन चीज़ों का difference क्या है. So that's the main point. The second point of unit 1 is meaning and nature of tourism industry. So आपको इसमें जो पढ़ना है वो है कि what is tourism industry all about. Tourism, how does that operate, इसमें क्या क्या components होते हैं, ये कैसे अपने हमारे environment, हमारा culture, हमारा जो खाना पीना है, ये सब चीज़ें कैसे उसको impact करती हैं tourism को, ये सब चीज़ें आपको समझने की इसमें ज़रूरत है. Third important point is role and function of important tourism organizations in the development and promotion of tourism. So there are different organizations, government organizations of tourism industry. Like आप लोगों को पता होगा, people who are in tourism, who have a background of tourism, they might know ITA, OFTA, UNWTO, ICO, ESTA, PATA, and ITDC, and other state tourism development corporations. So there are so many organizations which you need to learn about कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, वो किस चीज़ के स्पेशलाइज्ड हैं, वेयर इज़ देयर हेडक्वार्टर एंड वो इस्टेब्लिश कब हुई थी. सो हर एक चीज़ लेट्स से आईटा कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसका हेडक्वार्टर क्या है, व्हाट्स देयर वर्क. सो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ द क्रूशियल पॉइंट. मूविंग ऑन टू यूनिट 2. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूनिट 2 इज़ अर्थ मूवमेंट. सो इस वाले टॉपिक में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अर्थ मूवमेंट की आती हैं, वो जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, सब रीजन्स, ये सब. सो इसके बाद आईटा जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसने एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंस को कुछ कोड्स दिए हैं. जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का कोड है DEL. ऐसे सभी एयरपोर्ट के कोड्स हैं. सो वो कोड्स आपको याद करने हैं. एंड देन टाइम डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, लाइक लंदन में कुछ और टाइम है, इंडिया में कुछ और टाइम है. दैट टाइम डिफरेंस यू नीड टू लर्न कि कितना टाइम कब हो रहा होगा, हाउ टू कैलकुलेट दैट टाइम. And that is the main thing. Moving on to second point, world geography. इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है आपका climate and vegetation of the different part of the world, which includes all the continents and including India and India. And then but there's a lesson specifically for Indian geography, जिसमें हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि रिवर्स कहाँ हैं, माउंटेन एरियाज़ कौन से हैं, प्लेन एरियाज़ कौन से हैं, बीचेस एरिया कौन से हैं, लेक्स कहाँ हैं, डेजर्ट कहाँ हैं. सो दिस इज द स्टडी ऑफ दैट. थर्ड पॉइंट इज टूरिस्ट मूवमेंट. टूरिस्ट मूवमेंट इज बेसिकली अ डिमांड एंड ओरिजिन फैक्टर्स. सो इसमें बेसिकली जो हमें समझना है वो है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है हमारे सिस्टम पर, मानिए वाइल्ड लाइफ पर, कल्चर पर, जो भी टूरिस्ट साइट हैं उन पर. दिस इज द स्टडी ऑफ दैट. Moving further, Unit 3. The first point of Unit 3, the main thing which you need to learn is nature and characteristic of tourism product of India. So nature and characteristic of tourism product in India में जो main चीज़ें आती हैं वो हैं seasonality and tourist attractions आते हैं इसमें अपना folk dance, culture, religions and अपने जो legendary figures हैं जो जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू and all those important places related to India's freedom struggle जो भी इनसे related हैं, ये सब चीज़ें आती हैं. तो बेसिकली सीज़न, कौन कौन से सीज़न होते हैं,
टूरिस्ट अट्रैक्शन हमारे कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है, हमारे कल्चर क्या हैं, हमारे क्या फोक डांसेस, म्यूज़िक हमारे क्या हैं, हमारे रिलीजन्स क्या हैं, फ्रीडम फाइटर्स के कौन सी प्लेसेस हैं, ये सब चीज़ें यूनिट 1 के पहले टॉपिक में आती हैं. सेकंड टॉपिक इज़ मेजर नेशनल पार्क्स. सो जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इंडिया में काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, विच इज़ लाइक रणथंबोर, पेरियार, गिर, and there are so many. So this is the study about those. Next point is beach resort of India. Beach resorts में basically beach resorts are at the coastal area of the country. So coastal areas, जो हमारी cities आती हैं coastal areas में, वो गुजरात से होता है, गुजरात, then Maharashtra, we have Goa, we have Karnataka, we have Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and then West Bengal to the west side. So ये इन places पर beaches के बारे में, इनका जो tourism है उसके बारे में, and their resorts उनके बारे में there is study. नेक्स्ट इज यूनिट 4. सो यूनिट 4 का जो पहला पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट ओनली जस्ट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम रीजन टू रीजन. सो यूरोप में अलग है, अमेरिका में अलग है, इंडिया में अलग है. सो दिस इज अ स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स. That can be a rail transport, road transport, air transport, or the water transport. So this is a study of that. Second is licensing of air carriers. So this is a study of all air carriers, how they operate, what are their schedules, non-scheduled flights, and then the association which are associated with air carriers like ITA, ICAO, DGCA, study of them, their roles, and then there are other things like mileage, trips, one-way trip, return trips, airline ticketing, and then we have low-cost airlines, we have full-fledged carriers. So this is a study about all air segments, basically airlines and their work and their functions basically. And the third point is surface transport system. Surface transport, as the word surface says, surface वाला जो भी transportation है, like हमारे buses हैं, taxis हैं, rail है, water ships हैं, this is a study about the surface transport. So surface transport में जो आता है हमारा, as I said, कि cars हैं, railway system हैं. रेलवे सिस्टम इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम ऑल कंट्रीज. यूके में बिट रेल चलता है, यूरोप में यूरो रेल चलता है, अमेरिका में एमट्रैक चलता है, हर जगह अलग है. सो दिस इज स्टडी ऑफ दोज थिंग्स बेसिकली. सो नेक्स्ट इज यूनिट 5. यूनिट 5, द फर्स्ट पॉइंट कम्स is historical background of travel trade. So this point, historical background of travel trade, includes that how this all started, how travel agencies were incorporated, how they used to market their tourism, and how inbound came up, outbound came up, all that planning, everything. जो भी चीज़ें पहले प्लान होती थी, कैसे इसको ग्रो किया जाए, कैसे इसको बढ़ाया जाए. So that it is about the study of the background of travel trade, which includes all your tourism thing. आपके जो ट्रेड शोज होते हैं उनकी प्लानिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, उसके बाद ट्रैवल एजेंसीज का आना. सो दिस इज स्टडी ऑफ दैट. Second point is types of itinerary. So itinerary is basically is as per the client's requirement. Some people want कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है. So that's a FIT itinerary. That's a tailor-made package. And second is GIT, which is a fixed package. कि आपका ये package है, if that suits you, you book it. So types of itineraries कौन कौन सी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें involved होती हैं. This is study of that. Third is familiarization of with TIM. TIM stands for Travel Information Manual. So like passport हो गया, visa है, and the validity of the passport should be, the visa duration should be, and all those documents required for the travel. So that is travel information manual. अगर मेरे को travel करना अमेरिका, so मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या documents चाहिए to apply the visa to travel, वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ से जो भी उस कंट्री की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. So that I should know. So travel agencies basically work on that. Whenever there's a requirement comes, they have a travel information manual, they share that with the client, and that how it works. Moving on to sixth unit. So sixth unit is all about the hotel, basically hospitality. So first point is characteristic of hospitality industry. So hospitality industry का में जो स्टडी है इसका, कि होटल्स जब इनकॉर्पोरेट होते हैं और होटल्स जब बनते हैं, तो बेसिकली वो एक उनमें जो चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि वो उनका एरिया क्या होना चाहिए, बजट क्या होना चाहिए, किस टाइप के क्लाइंट्स वहाँ ट्रैवल करते हैं, एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ अतिथि देवो भव, एंड होटल का जो स्टाफ है वो कैसा लेना चाहिए. ये सब चीज़ों की स्टडी है द करेक्टरिस्टिक ऑफ होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर. सेकेंड पॉइंट आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्रंट ऑफिस स्टाफ, which is like reservation and registration.
front office staff is basically for the responsible for check-ins and check-out and all the reservation they make over the call for to the walk-in clients, to the pre-reservations reserved people. So this is a study about that. Now it is again, I mean, but there are hierarchy, of course. Duties are to be, divided as per the hierarchy. The responsibilities and everything is there. So this is basically, I'm just briefing about it. I will make another video where I will describe and elaborate in detail of all these units. This is just a brief about the topics which are there. So the third point is food production organization. So which is a food and beverage department of the hotel. So the hotel basically has three department. One is the front office and the food and beverage and the housekeeping. So these are three major department hotel has. So the food production organization thing is the food and beverage thing. So they have banquet thing, they have restaurant inside, they get bar. So this is a study of all that. I mean, inside the hotel, whatever the food and beverage things are there, and how they should, market that, how they should come up with the as per the requirement of the client, what is the demand. So accordingly, it's a study of that. So next is seventh unit. Seventh unit, the first point is concept of goods and services. So this point is majorly related to the cargo thing, goods and services which we which are transported through the tourism sector. So and this is the study of that. If you will read, you will get to know what are the features of it and what are the concepts, what are the marketing strategies again. So the similar thing are there. Second is, this is the important point. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. So this is P's of tourism marketing. जितने भी P हैं tourism के, like product, place, price, promotion, physical evidence, people, process and packaging. So there are a lot of P in tourism. So this is a study about all those P's. Public है, personal selling है, promotions हैं. So all those P's plays a vital role in tourism industry. This is a crucial point to study. Last and third point of unit 7 is destination image development. So any destination जिसको promote करना होता है, उसके लिए क्या क्या strategies एक tourism गवर्नमेंट जो बनाती है उसके लिए क्या क्या strategies करनी होती हैं, how they place it, how the branding done, how the marketing is to be done, which are the companies involved, how that needs to be taken further. It's a study of that. Next is 8th unit. So first point of 8th unit is tourism planning. Tourism planning is basically the role of government in the public and private sectors in formulation of tourism policies. So this is study of that. Basically क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाती है, क्या क्या फॉर्मुलेशन बनाती है टूरिज्म के लिए, क्या पॉलिसीज बनाती है जिससे कि नेशनल अपना इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूरिज्म बेटर होता है, हाउ टूरिस्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ कंट्री. So this is how this is about the study of about that basically. Second is tourism policy. So tourism policy is basically the factors influencing tourism policy. This is study about those factors. Those can be, I mean, a lot of factors which influence tourism, of course. So this lesson is a study about national tourism policy, level of tourism planning on international and national and regional state level, and WTO guidelines for that. Basically, World Tour Organization give the guideline to when a tour operates, when a country is doing the promotion of their travel. So WTO always give the guidelines to that. Basically, that area where people are traveling should be safe, health-wise. There should be proper food. There should be proper safety of the people. So there are certain guidelines basically. So which WTO decides, World Tour Organization decides. So that's the part of basically the tourism policy. It's a study about that. So third point is economic system and its impact on tourism development. So economy of any country, the impact of economy is a lot. जैसे हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, लाइक इंडोनेशिया, उनकी इकोनॉमी काफ़ी डाउन है. अब वहाँ पर टूरिज्म की हम बात करें, बट टूरिज्म इज लॉट, दैट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री. नाउ पीपल ट्रैवल अलॉट देयर बिकॉज वहाँ पर 5 स्टार होटल्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं. कॉस्ट वाइज बेनिफिट होता है लोगों को. टूरिज्म के लिए क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं वहाँ पर, एंड दे हैव लॉट टू शो. सो नाउ with this kind of planning, उस कंट्री की इकोनॉमी भी improve होती हैं and they can attract people, a lot of people towards their country. So that is just an example I'm giving you. This is a study about the economic system, how that economic system impact on travel and tourism. Next unit is unit 9. Unit 9 is little different and little big. I will make another video for unit 9. So we will talk about unit 10 for now. Unit 10, the first point is managerial process, this is regarding the functions and the roles of a manager in an organization and how internal and external environment get affected with the manager's decisions, his responsibilities in the business, how the business should he should function in the business. This is all about the managerial roles.
Second is understanding and managing individual and group behaviors. सो दिस इज अगेन बेसिकली दीज आर ऑफिस थिंग्स. ये आप यूनिट की बात करेंगे तो ऑफिस में जो बेसिकली एक मैनेजर का रोल होता है. सेकंड है उसके बाद ग्रुप की और इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग की बात जो होती है. थर्ड जो है वो बेसिक दैट इज टोटल अकाउंटिंग थिंग. अकाउंट्स कैसे परफॉर्म करता है. दिस इज ऑल the technical things here we have discussed. So understanding, if I talk about the point 2, so understanding the group and individual behavior depends, involves the personality, perception, learning values and attitude of the person. I mean, you need to understand. If I talk about the similar thing in tourism point of view, whenever a tourist travel, so groups also travel, individuals also travel. So you need to understand their mentality, their requirement, the kind of people they are, what's the requirement, what kind of services they are requiring. Accordingly, you will perform. So this is in the tourism point of view. But if you will read this lesson, actually you will not they have not related it to the tourism sector, but that's part of tourism, of course. So this is about the unit 10. So guys, here I will end my video. I will make more videos chapter wise. In those videos I will describe every lesson in detail, which is really going to be helpful in your net exam studies. I'm sure about that. Please do like my video and subscribe the channel to get the latest update